फाइनेंशियल प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल प्लानिंग। नाउ हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ प्लानिंग रिक्वायर्स द डेवलपमेंट, डेफिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द फॉलोइंग। देखो, एक प्लानिंग अगर करनी है, फाइनेंशियल प्लानिंग हो और व्हाटसोएवर कुछ भी प्लानिंग करनी है, तो सबसे पहले हमें इवैल्यूएट करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। नाउ उसके बाद क्या है, ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज फॉर अचीवमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव। हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए देयर आर डिफरेंट प्रपोजल्स और डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल। प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं ना, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स अवेलेबल है। Now, the objectives of business activity are invariably concerned with money as the universal measure of the ability to command resources. Thus, financial awareness probes into all business activities. Nevertheless, finance cannot be managed in isolation from other functions of the business, and therefore, financial planning will be undertaken within the framework of a plan for the whole organization, that is a corporate plan. We all survive only with one thing, that is money. Without money there's no finance, there's no financial planning, and there's no strategic finance at all. There's no requirement of management, no requirement of allocation of resources, kuch bhi nahi. So we know that money is the universal, or we can say that is a standard medium of measuring all our resources. हमारा जितना भी resources है हम लोग उसको in monetary terms ही measure करते हैं. Now in order to manage our resources well, we have to manage द एंटायर थिंग। तो मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग। ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है ये कॉर्पोरेट लेवल पे होती है, एकदम टॉप लेवल पे होती है। तो कॉर्पोरेट लेवल पे ये जो ऑब्जेक्टिव सेट होती है दैट इज इन कॉन्ग्रुएंस विद द फाइनेंस। देखना, फाइनेंस जो होती है सबसे ऊपर होती है, मैंने स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करते वक्त फाइनेंस को सबसे ज़्यादा अपर हैंड दिया जाता है, बिकॉज फाइनेंस के बिना कुछ भी नहीं है। हम लोग डिफरेंट टाइप की बुक्स भी पढ़े होंगे, बट एक बुक है फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस एग्जीक्यूटिव। ऐसे अदर कोई भी डिफरेंट अदर कोई भी डिपार्टमेंट में या अदर किसी भी केसेस में हम लोग बुक्स नहीं पढ़े हैं, बट फाइनेंस में ऐसी एक बुक आई है फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस एग्जीक्यूटिव। बिकॉज वेदर वी आर इन HR, marketing, or in procurement, logistics, in any function we are working, but we have to be concerned about the finance. Without money there's no other function. So the strategic planning approach to develop a business plan, हम लोग स्ट्रैटेजिक वे में कैसे करके प्लान करेंगे एक बिजनेस प्लान। अगर एक बिजनेस प्लान करना है तो हम कैसे करके डेवलप करेंगे। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू डिसीजंस about the basic direction and purpose of a business and development of plans to achieve that purpose। सिंपल सी बात है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या मतलब क्या होता है, दिस इज द सिस्टमेटिक अप्रोच टू डिसीजंस। क्या डिसीजंस हमको लेना है अबाउट द बेसिक डायरेक्शन। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होता है, बिकॉज स्ट्रैटेजी शो द डायरेक्शन, हम लोग को किस डायरेक्शन में मूव करना है, and the purposes of a business and the development of the plans to achieve that purpose. It may involve interpretation of policy, applying strategies, establishing corporate objectives, and generally ensuring that a company भाई कैसे करके हम बढ़ेंगे so that हमारा कुछ भी जो policies हैं या जो भी objectives हैं we can reach to those not in a haphazard manner. The period to be covered by a strategy in general, the minimum period for a long-term plan will be that necessary for the implementation of decisions on matters such as developing plant or equipment and the materials and the manpower necessary to utilize them, development of new products or services, and entry into a new field of marketing for existing product. So there can be any strategy. Strategy हमारी कुछ भी हो सकती है, maybe new facilities or coming up with new plans, expansion, anything. For control purpose, a strategic business plan may be broken down into shorter term plan. हमारा जो लॉन्ग टर्म प्लान होगा 5 years प्लान, हम लोग डायरेक्टली 5 years प्लान को लेकर नहीं चलते। 5 years प्लान को हम लोग ब्रेक डाउन कर लेते हैं, मे बी फॉर 1 year 2 year, उसके बाद फिर 6 month 1 month, मीन्स मीडियम टर्म प्लान एंड शॉर्ट टर्म प्लान। Thus it can be said that the process of strategic planning falls into the following 6 steps. First, business review and assessment, including appraisal of corporate strengths and weaknesses. Second, our appraisal of corporate strength and weaknesses, then establishment of objective, choice of strategies and the evaluation, detailed evaluation of the strategic plan, sometimes referred to as strategic budget, and then establishment of annual or other short-term budget, and then implementing द रिलेशनशिप बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। ये हम लोग ऑलरेडी इस चीज़ को भी समझे कि हमारा जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगा
उसके अंदर ही हमारी शॉर्ट टर्म प्लानिंग को भी इसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। हम लोग के लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेकर सीधा काम नहीं कर सकते कि 5 इयर्स में मुझे ये अचीव करना है, तो वी कैन नॉट वर्क आउट ओनली फॉर दैट 5 strategic level where corporate strengths and weaknesses are reviewed and long-term objectives are to be identified. It is to be kept in mind that business review should enable a forecast to be made of this compared with the results desired by the corporate objectives. A gap may be identified which must be made good by developing new strategies. Senior management must negotiate with middle management until a single strategic plan for the whole company is agreed. From this strategic plan, tactical plans must be drawn. सिंपल सी बात है, जो हम बताया वही चीज यहाँ पे डिटेल्स में मेंशन किया गया है दैट हमारा फर्स्ट एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है और उस लॉन्ग टर्म प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए हमें स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए टैक्टिकल प्लानिंग एंड देन द ऑपरेशनल प्लानिंग हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड कीपिंग इन व्यू ऑल दिस थिंग। ठीक है।